Good morning, student. Today we are going to study about cell. Cell, the unit of life. What is cell? You all will definitely answer that it's the basic structural and functional unit of life, as you have learnt earlier. Now, what do you mean by structural and functional unit of life? Before discussing these, just tell me one thing. What are the houses made up of? Obviously, you will answer bricks. Just houses are made up of many bricks and stones. Similarly, the body of every living organism, every living being is made up of many small units. These small units are termed as cell. These cells are called building blocks of life. That's why we said cell is a structural unit of life, because body of each and every organism is formed of cell. Now the next one, why it is termed as functional unit? As you know, in our body, every cell performs its own function. That is, there is complete division of labor. Now you may ask, what about unicellular organism? As body of these organism is composed of single cell. So the obvious answer that in these organism all the functions are performed by a single cell, whereas in multicellular organism there is a complete division of labor is present. Their body is divided into many cells, or we can say that composed of different cells performing different function. That is why we are saying it as a multicellular organism. Okay, now we can sum up that all organisms are composed of cells. Some are composed of single cells and are called unicellular organism, while other like us composed of many cells and they are termed as multicellular organism. Therefore, cells are building blocks or the basic unit of body structure. They are often organized to form tissues. When we discuss about the level of organization or the level of cellular organization, then we say that the cell is the basic unit. Cells combines to form tissues. Tissues combine to form organs, and various organs combine to form organ system. And these organ systems work coordinatively to which forms a complete organism. Do you know what is cytology? Cyto means cell and logos means study. It's the branch of biology that deals with the study of cell. Nowadays, cytology is replaced by cell biology. So actually the cytology is primitive branch and cell biology is modern branch. In cytology, it studies about the microscopic and the structural study of cell, and in the modern branch that we say that all the aspects related with the cell. Now what aspects? That is structure, cell physiology, cell reproduction, cell ecology, cell death program, cell genetics and cell biochemistry. Okay, now you have to find out who is the father of cell biology, who is the father of modern cell biology, and who is the father of Indian cell biology. Answer the questions without skipping the video. Now we are going to discuss about the discovery of cell. Cell for the first time was discovered by Robert Hooke in 1665. He designed microscope to observe cell. He published his findings in the book Micrographia. Now what he did, he actually did experiment with the cork. He took a cork formed from the bark of the tree which was once living but now that's dead. He studied the internal structure of cork. He cut a thin section of cork by means of an extra sharp pen knife and examined it over black object plate illuminated by the light with the help of plano concave glass. तो उसने देखा क्या उसके अंदर, उसने ऑब्जर्व किया कि इट हैड अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो हनीकॉम्ब लाइक थी विद नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे और उसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेलुली और सेल्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, cells of Robert Hooke were actually empty dead spaces separated by the cell walls because these were the dead cells. He also experimented with the living cells. He observed some kind of a liquid fluid inside the cell. Living cells were firstly discovered by Anton von Leeuwenhoek in 1674. He observed bacteria, protozoa. Robert Brown discovered nucleus in the cell. And one more thing which you have to keep in your mind, that when question is asked about who discovered cell, you will mention Robert Hooke, because there it's not mentioned that
You have to tell about either dead cell or living cell. जब आपसे पूछा जाएगा कि who discovered first living cell, then you have to mention it's discovered by Anton von Leeuwenhoek. And who discovered first cell, that's Robert Hooke. Who discovered first dead cell, that's also Robert Hooke. Now we are going to discuss about cell theory. Two scientists, Schleiden and Schwann, proposed cell theory. In 1838, a German botanist Schleiden examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which forms the tissue of plant. At the same time, a British zoologist, Schwann, in 1839, he studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane, and he also concluded that presence of cell wall is a unique character of plant cell. Together, Schleiden and Schwann proposed the cell theory, which states that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cell. But they did not explain as to how new cells are formed. उन्होंने ये तो बताया कि जो एनिमल्स और प्लांट की बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट्स की बनी हुई है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनेगा. So, Rudolf Virchow in the 1859, he was the first who explained that cells divide and new cells are formed from the pre-existing cell. और इसके लिए उन्होंने एक term दी, that is omnicellula ecellula. So, he modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give cell theory a final shape. जो final shape थी cell theory को वो किसने दी थी? Rudolf Virchow ने. अब हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स कि सेल थ्योरी ने क्या कहा. इसमें हम मॉडिफाइड सेल थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. All cells arise from pre-existing cells. Cells are the structure and functional unit of life. These three basic postulates are main. However, there are some few more points related to cell theory, that are cell bears the hereditary character of the organism, that is genetic material is present in all cells. Viruses are the exceptions of the cell theory because they are not capable of independent division. They can multiply only in other living cells. They are without plasma membrane, cytoplasm, enzymes and other cellular constituents. They consist of only either DNA or RNA. A typical cell possesses three major elements. एक जो typical cell है उसके अंदर three major elements होते हैं: outer envelope, genetic material and cytoplasm. जो outer envelope है वो क्या होगा? A cell is surrounded by an outer membrane called plasma membrane और प्लाज्मा लेमा. ये क्या करेगी? इट आइसोलेट्स द सेल इंटीरियर. लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है? एक और लेयर प्रेजेंट होती है, एक डिस्टिंक्ट सेल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अराउंड. क्या फंक्शन है इसका? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जेनेटिक मटेरियल. It represents hereditary material that not only controls cell but also contain information for forming the whole. यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, वो कंट्रोल कर रहा है सेल की फंक्शनिंग को भी और इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मिंग द होल ऑर्गेनिज्म. नाउ हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए. इन यूकैरियोट्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनक्लोज्ड होगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर एज अ क्रोमेटिन मटेरियल. ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर में अभी हमने दो चीज़ें बात की, एक तो आउटर एनवल्प होना ज़रूरी है और एक जेनेटिक मटेरियल. और जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में. नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म. ये क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो ऑक्यूपाई करेगी सेंटर स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर रीजन एंड द एनवल्प. इसके बीच में जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म ही मेन एरिया है जहाँ पे जितनी भी सेलुलर और जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी. और ये एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं? ताकि जो वो सेल है वो लिविंग स्टेट में रहे. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. This nucleus contains the chromosome, which in contains the genetic material DNA. Hence, the cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic cells, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotic cells. ऐसे cells जिनके अंदर membrane-bound nucleus present होता है उसे हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल. और ऐसे सेल्स जिसके अंदर membrane-bound nucleus present नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक कैरियन लिया गया है न्यूक्लियस से. ठीक है. इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक
एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी जिसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। इसकी डिटेल हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। Besides the nucleus, eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure. न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर membrane bound distinct structure present होते हैं जिसे हम बोलते हैं organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles. जो prokaryotic cells lack such membrane bound organelles और prokaryotic cells में ऐसे membrane bound organelles present नहीं होते। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो क्या मतलब है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो सेल की स्ट्रक्चर की है जब हम बात करेंगे तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी हैं। वो है सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया, आप उसमें देखिए सेल स्ट्रक्चर के लिए क्या 3 बेसिक चीज़ें चाहिए, सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल बाउंड्रीज में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स एंड साइटोप्लाज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म में। साइटोसोल को हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं। ट्रोफोप्लाज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में जिसमें आ जाएंगे सेल ऑर्गेनल्स एंड नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स। ओके, सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या आ जाएंगे ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्लास्टिड, सीडिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज़। और नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन या नॉन लिविंग सेल बॉडीज़, इसको ड्यूटेरोप्लाज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, रिजर्व प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। रिजर्व प्रोडक्ट्स में आ गई कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएंगे, एल्किलॉइड्स, असेंशियल ऑयल, गम, ग्लाइकोसाइड, लेटेक्स, ऑर्गेनिक एसिड, रेजिन, टैनिन, मिनरल क्रिस्टल। एंड सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएंगे, कलरिंग मैटर एंड नेक्टर। देखिए अब जो डिफरेंट टाइप्स की सेल है वो ग्रेटली वेरी करती हैं साइज़ में, शेप में, एक्टिविटीज़ में। For example, the mycoplasma, these are the smallest cell and they are only 0.3 micrometer in length. And whereas bacteria, they could be 3 to 5 micrometer, and the largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organism, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Now we are going to discuss about the shape of cell. The shape of cell may vary with the function they perform. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like or even irregular, as you can see in the diagram. There are also some cells which are long and pointed on the both ends. Such cells exhibit spindle shape. In some cases the cells are very long. Some may be branched like the neuron or the nerve cell. As you can see in the diagram, it's very branched and a long cell. The nerve cell, what's the function of nerve cell? It transfers and receives messages. It therefore help in coordinating and controlling the work of the different parts of the बॉडी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सेल की वेरियस शेप हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। जो साइज़ है इसका वो भी वेरी करेगा। सेल नंबर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस को। Okay, summing up now, today we discuss about the cell, the basic introduction, that is it's the basic structural functional unit of life and life of every organism, whether unicellular, multicellular, begins with the single cell. As you can see in this video, firstly this is shown that building which is formed by the bricks, then a human being. All these things are formed from the cells, either it's plant, either it's animal. एवरी सेल इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द होल इंडिविजुअल, और हर एक सेल जो है वो कैपेबल होगा पूरा इंडिविजुअल बनाने के लिए। द पोटेंशियल ऑफ फॉर्मिंग द होल इंडिविजुअल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। मैम मेरे क्वेश्चंस का आंसर तो बताओ। Oh, the little kiddo, I'm going to answer your questions now. So our first question was, who is the father of cell biology? Answer is Robert Hooke. Robert Hooke is the father of cell biology. Now our second question was, who is the father of modern cell biology or cytology? That is C.P. Swenson. Who is the father of modern cell biology? C.P. Swenson. And next question was, who is the father of Indian cell biology? And इस क्वेश्चन का आंसर है
A.K. Sharma, that is Arun Kumar Sharma. Next we study about the discovery of cell. So guys, who discovered the cell? Robert Hooke discovered the cell for the first time. Okay, next we studied about cell theory. Cell theory was given by Schleiden and Swan, and Rudolf Virchow modified the cell theory. Thanks, hope you like the content. Keep watching, stay tuned. In the next video we will discuss about prokaryotic cells and eukaryotic cells, and we will also reveal the name of little kiddo.